Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Ashar Abbasi. In this video tutorial, we are going to discuss and learn about computer system. In this tutorial, we will discuss about parts of a computer, input devices, output devices, and what is inside my CPU. So let's start. Viewers, basic parts you can see in a desktop computer are the monitor, keyboard, mouse, speakers, printer and microphone. All these devices are connected to CPU box and together they form a computer system. Viewers, जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये सारे डिवाइसेस होती हैं. ये डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं CPU से. इन डिवाइसेस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. So let's see what are input and output devices and how much they are important in a computer system. Viewers, input devices are those devices through which we can interact with the computer. हम जब भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो we need input devices like keyboard. कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. And mouse. Mouse is also an input device. We use mouse to control the screen and perform particular tasks. We use webcam for video conferencing. We use scanner for scanning documents. We use digital camera for digital photographs as input. We use microphone for voice recording. We perform different tasks through these input devices. इन इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं. These are input devices. Viewers, we use output devices to get or receive output from computer. Whenever we interact with the computer through input devices, for getting output we use output devices. जब भी हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसका आउटपुट देखने के लिए या आउटपुट के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं. लाइक मॉनिटर. A monitor is an electronic device used for display. We can see output from a computer on monitor screen. जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इंटरेक्ट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको देखने के लिए, उसको व्यू करने के लिए हम मॉनिटर स्क्रीन यूज करते हैं. मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस. सिमिलरली हमारे पास प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है. वी यूज प्रिंटर फॉर गेटिंग द हार्ड कॉपीज. इलेक्ट्रॉनिक डेटा की हार्ड कॉपी के लिए हम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं. वी यूज स्पीकर्स फॉर लिसनिंग वॉइस और साउंड. वी आल्सो यूज हेडफोन्स फॉर लिसनिंग वॉइस और साउंड. दीज आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. ये डिवाइसेस मोस्ट कॉमन है कंप्यूटर सिस्टम में, हम इनको इस्तेमाल करते हैं. All these are output devices. We also call them peripheral devices. Input-output devices को हम peripheral devices भी कहते हैं. What is inside my computer? Viewers, a computer is made up of different components like motherboard, processor, microprocessor, hard disk, RAM, etc. Each component has to do its own set of job in coordination with other components to make PC work properly. Viewers, जब हम CPU box की बात करते हैं तो CPU box के अंदर different components होते हैं. उनमें सबसे ज़्यादा important motherboard होता है. बाकी सारे components motherboard के साथ attached होते हैं. Central processing unit is also called the brain of computer. हम जब बात करते हैं brain of computer की तो it's very tiny and small CPU processor. एक बहुत ही छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल एक्शंस एंड कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है वो सीपीयू के थ्रू होती है या इस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू होती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. हम जब सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू इज अ कंप्लीट बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस मदरबोर्ड के साथ जितने भी डिवाइसेस, जितने भी कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. Well viewers, that's all from my side in this video tutorial. I'll see you in next. Thank you so much.